Evening gun! Fire! सो अभी बज रहे हैं 11 o'clock और हमने ऑलमोस्ट 50 मिनट्स तो बस के लिए वेट करा है। दिस इज़ टिप नंबर 1। तो अगर आप हॉलीडेज़ पे आ रहे हो तो जो बस मिले बैठ जाना। अभी हम जा रहे हैं वलेटा, जो कि माल्टा का कैपिटल है, एंड उधर ही सारा एडवेंचर, टिकट्स, साइट सीइंग पॉइंट्स एंड एवरीथिंग इज़ देयर। सो वलेटा पहुंचने के बाद गो एंड रोम अराउंड द फुल सिटी एंड प्लान अवर होल डे। बस ड्राइवर काफ़ी अच्छा मिल गया। आई थिंक वो ही छोड़ेगा हमको वलेटा। बस का डेस्टिनेशन नहीं है बट वो छोड़ देगा, ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं का? मछली खाने के लिए मरे जा रही हूँ। मेरे दिमाग में मछली, मेरे दिल में मछली, बस प्लेट में मछली। तेरे को पता है तो कौन से टाइप की मछली खाएगी? मतलब ऐसे तेरे को विशेज़ हैं? तूने जो बोला एक हड्डी हो बीच में। अरे 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 बाय बाय बाय। उसको क्या बोलते हैं? यूजुअल मतलब एक हड्डी वाला मछली। ऐसा उसको मैं कैसे समझाऊंगा यार वो रेस्टोरेंट वाले को। गोल्ड बैश फिश। फिश तो खाना ही है बट वी हैव 2 फिश नॉन ईटर्स। तू नहीं खाता? मतलब एंजॉय नहीं करता? मतलब एंजॉय नहीं है, ऐसे सपोर्ट कर दूंगा पर ऐसे प्रेफर्ड मछली के पास जाके से कूदना नहीं होता। तो मैं जीवन यामिनी चर्च का तो है ही, और हम उसको तो टेस्ट कराएंगे। किसको? बरसात? अरे स्मेल नहीं आएगी तो उसने बोल दिया है स्मेल। पर वर्षा तो तूने बोला स्मेल नहीं आएगी तो तू सब करेगी टेस्ट। ओके। ओनली पॉइंट ऑफ आवर लाइफ जब वो मछली खा सकते हो जब उसको कोरोना। ठीक है, तो इधर के जो सेलर्स के ऑनर में एट बराका गार्डन्स देर आर लाइक तोप कैसे बोल कैनन्स। सो दे फायर कैनन्स एवरी डे at 12 p.m. and once at 4 p.m. So there are like 2 times, and on both times you can go and see for free. Else what you can do is you can take a ticket for the history museum and you can stand beside that guy who fires that, and you can see the closer look of the cannons getting fired. हम पहले जाएंगे firing देखने, and then we'll go to eat the best single हड्डी वाली मछली। अभी we are walking in the streets of Valletta, the main town, or let's say the capital of Malta, and it's really beautiful, really serene. ऐसा सब एक्सपेक्ट किया था माल्टा से, बट ऐसा सब नहीं एक्सपेक्ट किया था। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। There are basically 2 Baraka gardens in the city of Valletta. One is Upper Baraka and the other one is Lower Baraka garden. So कुछ फ़र्क है नहीं, जैसा नाम है it states upper is basically at a height and lower is नीचे at a lower height basically. तो अभी हम गार्डन में पहुंच चुके हैं, हमने एंट्री ले ली है।
So Upper Baraka Gardens is the place where you can see the saluting gun fire every day at 12 p.m. is first fire, or the noon fire, and the evening fire is at 4 p.m. So you can also read more about in the link. तो यहाँ इतनी भीड़ है ऑफ सीजन में भी कि हमें कुछ नहीं देखने मिल रहा। ये देखो आगे हो रहा है वो बुलेट कैनन्स का फायरिंग और हम यहाँ पीछे खड़े हैं। चर्च का कुछ दिख रहा है तुझे? दूसरे में मुंडी। धुआं ही दिखा खाली हमें। तो अब हमें क्यों जाने दे रहा है? ओ दिख रहा है फाइनली कुछ थोड़ा सा दिख रहा है। I'm here exactly at the saluting battery, and it's about time. You can see Yamini and all the other people will be somewhere on the top. Made out of rope, has a handle and a hook. Put the hook part onto the legs, and obviously we keep our hand in between. Please note that immediately after the firing of the gun, this camp spanning 2 sections. The entrance Evening gun! Fire! So guys, जैसे आपने देखा, it was really crowded. बहुत ज़्यादा ही भीड़ है to see the saluting battery. So I really advise you to come 10 minutes early. वेरी एक्साइटेड। हम बहुत सी के बाजू में बैठे हैं। हमको यहाँ पे समोसे दिख गए, वेज समोसा, चिकन समोसा मिल गया है। We are at authentic Chinese restaurant. Pasties is really crispy and really tasty. There is always a guy who starts. That is him. Yeah, there is always a guy who continues. लेकिन मेरे को वो वाला करना है, गंगा वाला ऐसे, ओम नमः शिवाय ऐसे। हे भगवान। धीरे से। ये वीडियो मत लेना, लेकर ब्लॉगिंग छोड़ दूंगा मैं।